बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यू नंबर 61 से लेकर एमसीक्यू नंबर 70 तक बीके मेहता का जो चैप्टर 2 है उसको कवर करना है। सो एमसीक्यू नंबर 61, दैट इज in the circuit shown in figure 2.44, the galvanometer reads 0. The value of resistance R is अच्छा, the value of resistance R, you will need to find this resistance R value. Okay, so what we will do over here, this is the galvanometer read 0, so it means that the current flowing in this uh, section is equal to 0. So it means that the potential present at this region, at this point, is equal to the potential present at this point. Okay, अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास इक्वल है तो हम यहाँ पे वो ब्रिज का वो इक्वलेंसी इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, लाइक 10 टाइम्स आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 10 आर विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स 40. सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, this 0 cancel by this 0, so 4 times 7 is 28. Okay, so your resistance will be equal to 28. Option B will be the correct answer. Okay, next MCQ number 62, that is 5 resistance are connected as shown in figure 2.45. The equivalent resistance between point A and B. So you need to find the equivalent resistance between point A and B. Okay, so in this case, this resistance is in series with this resistance, तो इससे हमारे पास 10 ohm आ जाएगा. 10 ohm resistance is in parallel with this 10 ohm resistance, so इससे हमारे पास 5 ohm resistance आ जाएगा. और 5 ohm resistance is in series with this 5 ohm resistance, so इससे हमारे पास 10 ohm resistance आ जाएगा. तो it means कि यहाँ पे आपके पास 10 ohm resistance आ जाएगा. So now 10 ohm resistance is in parallel with this 10 ohm resistance, so इससे हमारे पास 5 ohm resistance आ जाएगा. So 5 ohm will be the equivalent resistance between point A and B. So in this case, option C will be the correct answer. Okay, this one will be the correct answer. Okay, next MCQ is MCQ number 63, that is the equivalent resistance of the arrangement of resistance shown in figure 2.46 between point A and B is. So we will need to draw this. Okay, so we need to find the equivalent resistance between point A and B. Okay, so यहाँ पे हम ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं. अच्छा, इन पैरेलल में से ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास सेम रेजिस्टेंस है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका आ जाएगा हमारे पास 8 ओम आ जाएगा. ओके, इन दोनों से हमारे पास 8 ओम आ जाएगा. अब 8 ओम इज आल्सो इन पैरेलल विद दिस 8 ओम रेजिस्टेंस, तो इससे हमारे पास यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा. सिमिलरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, that should be equal to 9 times 80 divided by 27. So 3 times 3 is 9, 3 times 9 is 27. 3 times 1 is 3, 3 times 3 is 9, 3 times 1 is 3, 3 times 6 is 18. तो इससे हमारे पास 6 ohm आ जाएगा. Now 6 ohm resistance is in series with this 6 ohm resistance, तो इससे हमारे पास 12 ohm आ जाएगा. ओके, यहाँ से 12 ohm आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 24 ohm आ जाएगा. So 24 is in parallel with 12 ohm, so 24 times 12 divided by 36 आ जाएगा. तो 12 times 1 is 12, 12 times 3 is 36, 3 times 8 is 24, तो 8 ohm हमारे पास आ जाएगा. So option B will be the correct answer. Okay, next MCQ is MCQ number 64. An ordinary dry cell can deliver a current of about 3 ampere, 2 ampere, 1 divided by 8 ampere, none of the above. तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी ड्राई सेल होते हैं उसका वोल्टेज होते हैं दैट इज 1.5 वोल्टेज होते हैं, तो करंट इतना हाई नहीं होगा, लाइक 3 एम्पियर नहीं, लाइक ड्राइविंग फोर्स जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है, दैट इज 1.5 वोल्ट, तो करंट इतना हाई नहीं होगा. तो इसमें ऑप्शन सी आएगा कि 1 डिवाइड बाई 8 एम्पियर होगा, यानी स्मॉल करंट होगा. ओके, एमसीक्यू नंबर 65, दैट इज 4 cells each of internal resistance 1 ohm are connected in parallel. The battery resistance will be, तो बैटरी का रेजिस्टेंस जो होगा that should be equal to 1 divided by 4 होगा. ओके, सेम रेजिस्टेंस है और R resistance are connected in parallel और 4 cells हैं. ओके, तो 4 parallel कनेक्शन होंगे तो उसका आपका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 divided by 4 आ जाएगा. That should be equal to 0.25 ohm. Okay, so option B will be the correct answer. MCQ number 66. In the circuit shown in figure 2.47, the reading of ammeter is internal resistance of battery is 0. तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं.
Okay, so in this case, internal resistance is equal to 0, okay, and you need to find the reading of the ammeter, so it means that you need to find the current in this section, okay. So यहाँ पे देखो तो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास करंट एज वी नो दैट फ्रॉम ओम आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, दैट इज 5 ओम, और वोल्टेज अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 10 वोल्ट। सो इससे हमारे पास 2 एम्पियर आ जाएगा। So in this case, option D will be the correct answer. Okay, next MCQ number 67. In the circuit shown in figure 2.48, find the potential difference across cell E1 and E2. So this is my E2. Okay, you need to find the potential difference across cell E1 and E2. Internal resistance is given to you. Okay, this is 1 ohm, this is 0.5 ohm. Okay, so what you will do. Okay, so in this case, we will need to find the current, okay, and current आपका क्या हो जाएगा, that will be equal to the potential difference, like like if you move in this direction, so what will happen, it will be E1 minus E2 हो जाएगा, that's equal to the I into all resistance। तो all resistance फाइंड कर लो, तो इस दोनों को फाइंड कर लो 3, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो फ्रॉम दिस पैरेलल कनेक्शन इसका फाइंड कर लो, तो 3 टाइम्स 18 डिवाइड बाई 9, सो इससे हमारे पास 9 ओम आ जाएगा, सॉरी 2 ओम आ जाएगा, सो इससे हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। 4.5 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 6.5 प्लस 0.5 दैट्स इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 8, तो 8 आ जाएगा। तो E1 हमारे पास कितना है, दैट इज 4, माइनस E2 हमारे पास कितना है, दैट इज 8, विल बी इक्वल टू I इंटू 8 आ जाएगा। सो इससे हमारे पास -4 आ जाएगा, सो इससे हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -0.5 आ जाएगा एम्पियर। दिस इज माई करंट। ओके, नाउ वी विल नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1। तो आपका E1 क्या हो जाएगा, दैट्स विल इक्वल टू current into internal resistance, that potential difference plus current into internal resistance। तो आपका ये कितना है, दैट इज 4 वोल्ट, माइनस आई आर इस साइड पे ले आओ तो -0.5 हो जाएगा, और -0.5 दिस विल कम प्लस, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.5, तो so this will be equal to 4 plus 0.25, so that's equal to 4.25 volt। okay, 4.25 volt, ये इससे आ जाएगा। और ओके, नाउ फॉर E2 यू शुड बी वेरी केयरफुल ओवर हियर। हमने करंट फाइंड किया था I इन दिस डायरेक्शन, ओके, हम ये डायरेक्शन ले रहे थे करंट के लिए, so that is okay for E1 but that is not okay for E2। okay, so in case of E2 your current should be opposite of this current। okay, so in case of E2 what you will do, you will take current as a 0.5 ampere, okay, not negative 0.5 ampere। okay, so अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास E2 क्या हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू I रेजिस्टेंस, ओके, R2 प्लस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू E2 माइनस IR2 हो जाएगा, तो हमारे पास V2 क्या हो जाएगा, E2 इज 8 वोल्ट, माइनस करंट कितना है, दैट इज 0.5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 1 ओम, तो V2 हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 7.5। सो एक हमारे पास 7.5 आ रहा है, दूसरा हमारे पास 4.25 ओम आ रहा है। Yes, so option B will be the correct answer। okay, this will be the correct answer। okay, next MCQ number 68। Three resistance of 4 ohm, 6 ohm and 10 ohm are connected in parallel in a circuit with a battery of EMF of 4.53 volt. If the current through 6 ohm resistance is 0.6 ampere, the internal resistance of the battery is, okay, so you need to find the internal resistance of the battery। okay, और यहाँ पे हमारे पास voltage कितना है, that is 4.53 volt across 6 ohm resistance, so that is 4.53 ohm volt। okay, so this will also be the same voltage across 6 ohm resistance because all resistance are connected in parallel points,
If the current through 6 ohm resistance is 0.6 ampere, okay, this is 0.6 ampere. Okay, so now the internal resistance, so as we know that E will be equal to current into resistance, internal resistance plus current into the external resistance. तो यहाँ पे हमारे पास E क्या हो जाएगा, that is given to you, that is 4.53. करंट कितना है यहाँ पे हमारे पास, करंट जो है that is 0.6, internal resistance 0.6, रेजिस्टेंस कितना है that is 6. सो इससे हमारे पास 3.6 आ जाएगा, और 4.53 माइनस 3.6, so 0.93 इससे आ जाएगा. So 0.6 volt will be equal to 0.93. So voltage, sorry, this is resistance. So resistance will be equal to 0.93 divided by 0.6. So that's equal to 1.55. So over here, the potential difference across all these three resistance are same. Okay, वो same है, तो it means that यहाँ पे हमारे पास जो equation बनेगा, E will be equal to current, total current, okay, into the small resistance plus V volt होगा. Okay, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड V. ओके, और V क्या आएगा, V आपका हो जाएगा 0.6 एम्पियर टाइम्स 6, सो उससे हमारे पास आ जाएगा 3.6. ओके, वोल्ट हो जाएगा. सो 3.6 वोल्ट इज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एज वेल. ओके, तो ये कितना है, दैट इज 4.53 है, दैट्स इक्वल टू I. ओके, R प्लस दिस, दैट इज 3.6 वोल्ट. ओके, तो हमारे पास R will be equal to this, ये हमारे पास कितना है 4.53 माइनस 3.6, सो 4.53 माइनस 3.6, इससे क्या आता है 0.93 आता है, 0.93 वोल्ट आ जाएगा. ओके, सो अब हमने करंट को फाइंड करना है कि हाउ मच इज दिस करंट. सो ये करंट हम फाइंड कर लेंगे बाय फ्रॉम दिस, लाइक यहाँ पे करंट कितना जा रहा है और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है. सो लेट्स सपोज दिस इज माय I1, दिस इज माय I2 एंड दिस इज माय I3. सो योर करंट I विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3. तो करंट आपका क्या हो जाएगा, I1 कितना है, दैट इज V डिवाइड बाय R. तो V हमारे पास कितना है 3.6 डिवाइड बाय R इज 10, प्लस I2 कितना है 0.6 एम्पियर, I3 कितना है दैट इज 3.6 डिवाइड बाय 4 ओम. तो हमारे पास करंट कितना हो जाएगा, दैट इज 0.36 हो जाएगा, प्लस 0.6 हो जाएगा, और 3.6 डिवाइड बाय 4 से क्या आता है, दैट्स इक्वल टू 0.9. तो इन सबको आप ऐड कर लो, तो इससे क्या आ जाएगा 0.9 प्लस 0.6 प्लस 3.36. So इससे हमारे पास 1.86 आ रहा है, 1.86. So your internal resistance will be equal to 0.93 divided by 1.86. 0.93 divided by 1.86, that's equal to 0.5. So this will be your final answer. Option D will be the correct answer. Okay. Next MCQ number 69. That referring to figure 2.50, the resistance across terminal AE. So you need to find the resistance across terminal AE. Okay. So what you will do, we need to start from this. तो यहाँ पे देखो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में, तो 9 प्लस 5 दैट्स विल बी इक्वल टू 9, 14 आएगा, इससे 14 आ जाएगा. 14 इज इन पैरेलल विद दिस रेजिस्टेंस, तो इससे हमारे पास 7 ओम आ जाएगा. नाउ फ्रॉम दिस यू हैव 7 ओम. 7 ओम इज इन सीरीज विद 11 ओम, सो इससे हमारे पास 18 ओम आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल में 18 ओम आ जाएगा. इन दोनों के अक्रॉस फिर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाएगा. फिर 9 प्लस 13 दैट्स इक्वल टू 22. ओके, तो 22 ओम रेजिस्टेंस आपका यहाँ से आ जाएगा, दैट्स विल बी इन पैरेलल विद दिस 22 ओम रेजिस्टेंस. सो इससे हमारे पास 11 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 70. A battery of EMF 2 volt and internal resistance of 0.5 ohm is connected to a circuit consisting of a resistance of 5 ohm and a galvanometer of resistance 15 ohm connected in series
what a resistance of 3 ohm is connected across the terminal of the galvanometer. What is the current through the galvanometer? So you need to find the current through the galvanometer. Okay, all these parameters are given to you. Okay. Okay, first of all we need to find the equivalent resistance of these two. So इससे equivalent क्या आ जाएगा? 15 times 3 divided by 18 हो जाएगा. Okay, तो 3 times 1 is 3, 3 times 6 is 18, 3 times 2 is 6, 3 times 5 is 15. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.5 ohm. Okay, 2.5 ohm plus 5 ohm, that will be equal to 7.5 ohm. 7.5 ohm plus 5.5 ohm, that will be equal to 8 ohm. Okay, तो 8 ohm हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. करंट कितना हो जाएगा? I is equal to V divided by R. तो V कितना है? That is 2 volt. और R कितना है? That is 8. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 divided by 4, which is equal to 0.25 ampere. Okay, that is your current. Okay, अब हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज को फाइंड कर लेते हैं. इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? करंट हमारे पास आ गया 0.25 एम्पियर. तो 0.25 एम्पियर टाइम्स 5 will give you the voltage across this 5 ohm resistance. तो 0.25 टाइम्स 5 will equal to 1.25. तो 1.25 वोल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा. और बाकी जो रह जाते हैं 0.75 वो आपके यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज भी है. ओके, तो आई जी करंट कितना हो जाएगा? तो आई जी करंट आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर. वी कितना है? 0.75. आर कितना है? दैट इज 15 ओम. तो 0.75 डिवाइड बाई 15, दैट्स इक्वल टू 0.05 एम्पियर. ओके, so over here we have other options, but 0.04 is near to 0.05. So this will be the answer. Okay, so this is the end of this video. If you have any confusion, then please put that confusion in the comment section. Allah Hafiz.